और अब हम इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के पहले सेशन का आगाज करेंगे, जिसकी सदारत कर रहे हैं मलिक अमीन असलम, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन क्लाइमेट चेंज। और उनकी ज़ेर सदारत ये आज का जो पहला सेशन है, इसका आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और हम सूरह रहमान की कुछ आयात जो हैं उनकी आप समाअत करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तलावत कुरान हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। वल अर्द वदअहा लिल अनाम। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। और अनाज जिसके साथ घुस होता है और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Well, for the opening remarks, I would like to invite Ms. Nahid S. Dorani. She is the Secretary at the Ministry of Climate Change, Pakistan. Please put your hands together and welcome Nahid S. Dorani. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me begin by extending a very warm welcome to all of you and thanking you for gracing this occasion. We all know Pakistan is hosting the World Environment Day, and we are here to celebrate. Indeed, it is an honor in recognition of the work that Pakistan has done, a very serious, robust, and a strong work that has been put on ground. It will be very important to remember that Pakistan is doing this nature-based solution work with its own finances. It's largely public investments. And we also know that the country, given the size, given its context, has multiple challenges. Despite those challenges, pandemic, the Prime Minister of Pakistan has put the green agenda at the center stage. It is his vision and he leads it from the front. Pakistan has undertaken a lot of work on nature-based solutions, the most central being the 10 billion tree. You'll get a lot of glimpses of that project as we unfold our event today. In fact, it is not a project. It's a long-term transformation of ecosystem restoration in Pakistan. It's a very extensive program. It can be very transformative if it's taken from year to decades onwards. But the light has been set and we have entered into an era
whereby we have very strong work, may it be restoration of lands, may it be protected areas, may it be restoration of wetlands, and may it be a lot of work and commitments on the energy side. All of you must have seen the electric vehicles that are parked outside. Pakistan is one of those countries that has put the energy agenda, transformation towards renewable, again at the center stage, and it is a very bold step. Last but not the least, all of the work that Government of Pakistan is carrying forward is very sensitive to people. It's people-centric. We are sensitive to take the youth, women, local communities and be sensitive about their incomes, their livelihoods and their robust involvement. Otherwise, it is not possible to take afforestation and greening agenda on a sustainable basis or as a part of our economic and social development. Let me end here. I do not want to take much time. Please stay tuned and you will get very robust glimpses of the work that the government, civil society and the people of Pakistan have put on ground on climate agenda. Thank you. Well, this great composition from Suhail Rana, ये देश हमारा है, इससे हमने सवारा है, इसका हर एक ज़र्रा हमें अपनी जान से प्यारा है, is the theme song for this year's World Environment Day being hosted by Pakistan, in Pakistan. Now we'll move on. We have a message from the UNEP. We have a message from the Executive Secretary of the UNFCCC. I am pleased to participate in this virtual event to mark World Environment Day and thank Pakistan for hosting it. It's a day we also launch the UN Decade on Ecosystem Restoration. Throughout the world, our forests are under siege. Each year, an average of 122 million hectares of forests are affected by fires, pests, diseases, invasive species, drought, and adverse weather events. Each year, 75 billion tons of fertile soil are lost to land degradation, and 12 million hectares of land are lost to desertification and drought. These events are among the many drivers of ecosystem destruction: species extinction, threats to human health and food security. Stopping the damage is not enough. We need to restore our ecosystems. Restoration enhances the resilience of ecosystems to climate impacts. Restoration has considerable mitigation potential as well by sequestering carbon in trees,
shrubs, and soils. The next 10 years, beginning now, must be a decade of unified action. We must achieve the Sustainable Development Goals. We must move the Paris Agreement from adoption to implementation. The post-2020 Global Biodiversity Framework must be adopted, and the decade of ecosystem restoration must achieve its goals to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystems on every continent and in every ocean. All nations must do their part. Our host, Pakistan, provides some encouraging ways forward. Steps such as its 10 billion tree tsunami initiative, aimed at restoring more than 1 million hectares of degraded forests, its work to restore degraded wetland ecosystems, and its commitment to expand its protected areas and create several new national parks. This restores nature, protects against biodiversity loss, and helps address climate change. It also creates jobs, something all economies need as the world begins to emerge from COVID-19. Ladies and gentlemen, by responding proactively right now to the climate change emergency, including restoring our land resources, we will reduce numerous future risks to humanity and ecosystems. I thank all of you for your efforts and look forward to your ongoing work as we get this decade of restoration underway, as we look forward to COP26, and as we build a cleaner, greener, and more inclusive future for all people. Thank you. Thank you, Executive Secretary UNFCCC, for your wonderful message. Now we have a message from the Administrator, UNDP. Prime Minister Imran Khan, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great privilege to join you and be part of this high-level event to celebrate World Environment Day and to, at least by virtual means, return to Pakistan, where I began my professional journey so many years ago. It comes at a pivotal moment also for both people and planet. As the world reels from the devastating consequences of the COVID-19 pandemic, humans are pushing the Earth to breaking point. Human activity has altered almost 75% of the Earth's surface, squeezing wildlife and nature into an ever smaller corner of the planet. With it, biodiversity is withering before our eyes. Almost unbelievably, up to 1 million plant and animal species now face extinction, many within decades. At the same time, climate change continues its relentless march. 2011 to 2020 was the warmest decade on record. Look, for example, to the Hindu Kush Himalayan region. Nearly 3/4 of the glaciers there are now retreating at an alarming pace due to climate change. But yet, I am hopeful for the future. As many countries start to slowly recover from this devastating pandemic, we are witnessing the emergence of a greater collective will to take the level of climate action that is needed, to move towards a global green economy, and to drive forward game-changing efforts to protect and restore our natural world. On World Environment Day, the UN Decade on Ecosystem Restoration will be launched. It is the start of a global mission to rally individuals and communities across the globe to engage in grassroots efforts that will repair billions of hectares of land. That includes everything from seeding native trees to tackle desertification, to cleaning rivers and oceans, to greening our cities. Generation restoration means bringing back plants and animals from the brink of extinction, from the peaks of mountains to the depths of the sea. And restoring 350 million hectares of degraded lands by the year 2030 could remove an enormous 26 gigatons of greenhouse gases from the atmosphere, helping also to slow climate change. It will also help to ensure food and water security for millions of people. It will
reduce poverty and create new green jobs that will pay better. It will help to protect against disasters and provide a natural buffer against pandemics like COVID-19. In fact, restoration can help us to achieve all of the Sustainable Development Goals. Indeed, the extraordinary efforts of countries like Pakistan are inspiring communities across the globe to take new, bold actions to protect and restore the environment. Look, for instance, to its commitment to source 2/3 of its energy needs from renewables, to its billion-tree tsunami program, which is restoring ecosystems, allowing wildlife to return and creating new green jobs at the same time, and to its pioneering work to develop a nature performance bond. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, with CBD COP15, COP26, and the high-level dialogue on energy all now on the horizon, we are entering the pivotal moment for our collective future. We have more technology, we have more science, and we have historic levels of stimulus, all of which we can deploy to slash carbon emissions and invest in protecting our natural world. At the United Nations Development Programme, we will continue to offer integrated solutions with our partners to help countries and communities to make deep inroads in these vital areas, and join with our sister agency, the United Nations Environment Programme, in promoting these forward-looking concepts and ideas, which in turn will help to ensure that we now embark on a brand new era of positive transformation for both people and planet. Thank you so much, and happy World Environment Day. Thank you, UNDP. Now moving on, we have a message from the president of ICUN. IUCN also acknowledged Pakistan's efforts when Pakistan became the first country in the world to meet international bond challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forests. So I'll request them to play the message from the president of IUCN. Prime Minister Imran, Minister for Climate Change in Pakistan, Malik Amin, Executive Director of the UN Environmental Programme, Inga Anderson, and dear all the participants. As we observe this very important day for environment globally, let us commit again to restore and reconnect positively with nature. The current pandemic has put to imperative need for our collective action to ecosystem restoration, so as to secure our health and well-being. Ladies and gentlemen, on behalf of International Union for Conservation of Nature, as a president of IUCN, I commend the government of Pakistan and the UN Environment Programme for your jointly leading this event successfully. Today's launching of UN Decade on Ecosystem Restoration also provides a fitting prelude to the IUCN's World Conservation Congress in coming September, Marseille, France, where IUCN's one decadal agenda for Nature 2030 will be deliberated upon by our union's 14,000 plus members, including government and state agency members, NGO and indigenous people members, as well as scientific academic institutions members. Your Excellency, ladies and gentlemen, IUCN also appreciate and welcome the newborn challenges pledge of restoring 1 million hectare forest made by Pakistan. As you all know, government have active roles in shaping and leading strategic direction towards a well-balanced, equitable, and sustainable use of natural resources,
safeguarding its nature heritage. Pakistan is one to look up to. By integrating nature-based solutions into countries' development programs, so as to answer countries' pressing societal and development challenges, the country's green COVID-19 response, the 10 billion tree tsunami projects, and the Recharging Pakistan initiative, along with 85,000 nature-positive jobs generated, are significant contributions to UN Decade ecosystem, which we are launching today. Let us build back better and greener. Happy World Environmental Day. Thank you. Your Excellency, Prime Minister. Thank you, President IUCN. मलिक अमीन असलम साहब की ज़ेर सदारत इस कन्वेंशन का पहला सेशन जारी है। दूसरे सेशन की क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो मुलाहिज़ा करेंगे। एक बैंड है जो आया है कहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान से, और बहुत ही पॉपुलर गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त की यहाँ पर भरपूर तर्जुमानी भी करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल है, काफ़ी पज़राई मिली जीबी में भी, पूरे पाकिस्तान में भी। सलमान पारस और उनकी पूरी टीम आप सबकी पुरज़ोर तालियों में, जोश भरी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं सलमान पारस। अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबान भी हम इसके। तुषार मोसम खुशान करे करे हिफा, तुषार मोसम खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे।
करे करे हिफा तुषार बमोस मखुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे अल्लाह की रजा से है निगहबान भी हम इसके मुझे बताया जा रहा है कि कोई शोर शराबा होना चाहिए भाई, कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और नहीं ऐसी भी कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो ये जो दिन पाकिस्तान आज पाकिस्तान को ये जो एजाज़ मिला है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करें, तो ये किसकी वजह से मिला है ज़रा पता तो चले। ठीक बात है इमरान, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल अब ये जो दिन मनाने का एहसास मिला है ये आपकी वजह से मिला है, जो फॉरेस्ट की टीम यहाँ बैठी है माशाल्लाह। इश्तियाक साहब खड़े होके उनको दाद दे रहे हैं, और मलिक अमीन असलम साहब, तुम्हें याद है कि जब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब दरख्त का टारगेट कंप्लीट किया था तो आप यहाँ पे मौजूद थे ना। हाँ, आगे चलते हैं। So that was a beautiful performance from Gilgit-Baltistan, Salman Paris. Thank you very much, and your team as well. Moving on, we have yet another message coming from the Executive Secretary at the UNCBD. Ecosystem services are indispensable to the well-being of all world's people. Yet, ecosystems continue to erode. Ecosystem degradation already affects the well-being of at least 3.2 billion people. Fortunately, it is very possible to reverse this trend. The 5th Global Biodiversity Outlook shows that where policy measures have been put in place and where actions have been implemented, they have delivered positive results. Therefore, ecosystem restoration, when implemented effectively and with the support of local population, it works. Restoring 15% of converted lands in the right places could prevent 60% of projected species extinctions. Restoring through agroforestry alone has the potential to increase food security for 1.3 billion people. Restoring coral reefs in Mesoamerica and Indonesia could deliver an additional $2.5 billion in ecosystem services benefits per year. Ecosystems restoration is at the core of the post-2020 Global Biodiversity Framework to be adopted later this year in Kunming, China. It will serve as an excellent backdrop to the expected actions under the UN Decade on Ecosystem Restoration. The Convention on Biological Diversity, together with our sister Rio conventions, will use this platform to further enhance synergy for optimizing the multiple benefits of actions for ecosystem restoration. I congratulate the government and the people of Pakistan, the host of this year's World Environment Day, on their vision of investing in nature-based solutions. Pakistan's 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded forest. The Recharge Pakistan initiative, restoring degraded wetland ecosystem.
and protected areas being expanded to include 15% of land area and 10% of marine area by 2023 is a clear and tangible demonstration of being part of the solution for nature. These initiatives will not only restore and protect nature to fight climate change and biodiversity loss, but they will also create thousands of green jobs and serve as an inspiration to other countries to emulate and adapt. Today, on World Environment Day, let us dedicate ourselves to preventing, halting, and reversing the degradation of all the ecosystem worldwide. Dear friends, the greatest problems facing humanity, including land degradation, biodiversity loss, pandemics, and climate change, are closely linked. Across the world, our demands for food, raw materials, and homes are not sustainable. We are putting our natural environment under enormous pressure. Our World Environment Day host country, Pakistan, is home to iconic landscapes and ecosystems. The mountain beauty of Swat and the majestic Karakoram, the snow leopard of Chitral, the 5 rivers of the Punjab. At the UNCCD, we fervently believe that restoring land and ecosystems has a huge return on investments. Nature-based solutions can guide us towards a greener, healthier, and more sustainable stewardship of our planet. This year, World Environment Day marks the start of the UN Decade of Ecosystem Restoration. The pandemic has shown that when political will, collective action, and meaningful investment come together, we can make a difference. This is how we can revive and protect our ecosystems. I applaud Pakistan's leadership and vision. The 10 billion tree tsunami is a wonderful and vital initiative to restore and regreen degraded forest ecosystems. Let us all be part of generation restoration together. Thank you. So that was Mr. Ibrahim, Executive Secretary at the UNCCD. Moving on, we have yet another message from Executive Director at the UN Habitat. Your Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Honorable Mr. Malik Amin Asma, Special Assistant to Prime Minister on Climate Change, Minister of Climate Change, Honorable Ms. Zatash Gul, Minister of State for Climate Change, Ms. Inga Anderson, Executive Director of UNEP, Honorable Ministers, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning, afternoon, and evening to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I extend my sincere congratulations to the governments of Pakistan and UNEP for hosting this year's observance of World Environment Day in Pakistan. Ecosystem restorations. The theme of this year's World Environment Day is one of the most critical issues of our time as we battle the climate crisis and the current COVID-19 pandemic. UN Habitat looks forward to supporting member states and cities during the UN Decades on Ecosystem Restoration that starts today. UN Habitat's focus is on sustainable urbanization, and nature-based solution is central to our efforts. It is entirely befitting that Pakistan, with its rich diversity of ecosystems, ranging from some of the highest mountains
and glaciers in the world to the Arabian Sea is the host of today's global event. From UN Habitat, I assure you, we will work to make this a decade of action. Indeed, to recover from the pandemic and address the climate crisis, we have no other choice than to heal nature and the planet while we heal ourselves. Ecosystem restoration is essential for this. Suburban expansion almost always leads to the degradations of natural habitats and ecosystem found within cities. Cities need to minimize habitat destruction and rehabilitate existing habitats to a level of good ecological functioning, both for biodiversity and resilience. While land use change is a key driver of zoonotic diseases like COVID-19 and climate change, sustainable urbanization can play a central role in ecosystem preservation and restoration. In Africa and Asia, where urbanization is increasing fastest, ensuring that cities are well planned and compact will ensure that they use less energy and natural resources. UN Habitat's Urban Planning Lab helps cities to use planned city extensions to optimize densities and minimize peri-urban land conversion. In complement, our global public space program supports citywide public space assessments and strategies to protect green space. The restoration of urban riverine corridors has been one important result. Increasing green spaces in cities and better managing their resources consumption and waste not only makes cities more livable for people, but also protects biodiversity and helps to build back degraded ecosystem. UN Habitat supports cities and local governments in turning off the tap of pollution. And UN Habitat's Waste-Wise Cities initiative, for example, connect more than 200 cities across the world. Through this network, cities can share their experiences and innovations leading to the replication of waste management solutions suited to local contexts. We also work with our sisters agency UNEP in identifying global marine litter hotspots where we support cities to improve their solid waste management. Under a new joint initiative with UNEP, the Go Blue project, we are working to create a sustainable blue economy in selected coastal towns of Kenya. This aims to establish planning framework linking cities and the marine environment and will pilot a blue carbon project to restore thousands of hectares of mangrove and seagrass through community engagement and create hundreds of jobs in waste recycling. It will also design a constructed wetland for wastewater recycling and ecosystem restoration. Ladies and gentlemen, in these difficult times, it is more crucial than ever that we reinforce and join our efforts to strengthen global cooperation to accelerate progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement, and the new urban agenda. The amount of money invested in ecosystem destruction is 40 times higher than the amount invested in ecosystem restoration. This must change. Please join me in committing to play our part in the realization of the vision we hold for an inclusive, resilient, and sustainable future. I look forward to strengthening our cooperation. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Her Excellency, Ms. Mamoona Mohammed Sharif, thank you very much for being with us and sending across a very good message. She's the Executive Director at UN Habitat. Now there's a video we need to play, and you will definitely enjoy this video from UNEP on glaciers. So let's have a watch.
Moving on, we have yet another message from the Executive Director at UNOPS. Excellencies, ladies and gentlemen, for far too long we have been harming the natural world. Our list of losses is long and painful. Wetlands, forests, coral reefs, and our biodiversity are disappearing at astonishing speed. We are getting more frequent and more damaging droughts, floods, fires, and storms. Our habitats are rapidly degrading. In the words of the UN Secretary General Antonio Guterres, we face an environmental emergency. COVID-19 has been yet another wake-up call. If we are unkind to nature, it will be unkind to us. Because our natural ecosystems support all life on Earth. If they suffer, we will all suffer. This World Environment Day, we have a chance to change that, a chance to make peace with nature. At UNOPS, we do our bit by finding sustainable solutions for a greener future. Whether it's through supporting sustainable, resilient, and inclusive infrastructure and supply chains, or through our significant management expertise to help protect our ecosystems, or by helping ensure that countries and organizations manage their waste sustainably and responsibly. Infrastructure is central to addressing climate change. Through our mandate in infrastructure, UNOPS supports countries and communities to both mitigate and adapt to a changing climate. I want to thank Pakistan for their commitment to hosting World Environment Day 2021, helping to mobilize the call to restore our damaged ecosystems. Together, we can build a better future for all. This World Environment Day, let's start by resetting our relationship with nature. Thank you. Okay. We are about to close the first session of the World Environment Day being hosted by Pakistan. And Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, he will be joining us shortly for the second session as we start. Moving on, we have another message from the Director General at FAO, Food and Agriculture Organization at the UN. The COVID-19 pandemic has put the spotlight on the critical role of the healthy ecosystems and the services they provide. But the pressure on the natural resources is increasing. Degraded ecosystem affect the well-being of 3.2 billion people, that is 40% of the world population. Increase poverty and food insecurity. It is time to move from the crisis to recovery. FAO is proud to co-lead the UN Decade on Ecosystem Restoration, which is a unique opportunity for restoring harmony with nature by showing it the reverence it deserves. While the feeding the world in a sustainable manner, bring degraded ecosystems back to the sustainable production will help provide the food we need, leaving no one behind. New sustainable agricultural opportunities could generate almost 80 million jobs by 2030, with more than 90% of them located in developing nations. Transforming agri-food and land use systems could create new business opportunities worth up to
4.5 trillion US dollars a year by 2030. This year's World Environment Day slogan, reimagine, recreate, restore, defines the role we all have to play. We must take bold actions like Pakistan's ambitious 10 billion tree initiative that combines community participation, green job creation, and a strong political commitment. Let us join forces to restore ecosystems, ensure better production, better nutrition, better environment, and a better life for all. Thank you, Director General, Food and Agriculture Organization at the UN. Thank you very much for your message. Moving on, we have another message from the Minister for Environment, Federal Republic of Germany. Minister Malik Amin Aslam Khan, ladies and gentlemen, today's World Environment Day marks the start of the UN Decade on Ecosystem Restoration. Climate change is progressing, biodiversity loss continues. The time left to achieve the Sustainable Development Goals is dwindling while we are still in the grip of the coronavirus pandemic. We are all very aware that we must take action as an international community more urgently than ever before. We need a clear trend reversal. We have an excellent opportunity for this in the UN Decade on Ecosystem Restoration. We should actively use this opportunity. Ecosystem restoration helps us with many of the current challenges. Restoring ecosystems protects the climate, conserves biodiversity, makes sustainable development possible, and contributes to sustainable recovery from the pandemic. It is up to all of us to use this potential. My warm thanks goes to Pakistan for its commitment to restoring ecosystems and for hosting this year's World Environment Day. We need days like this to reaffirm our joint goals and support. In the next decade, we must lay the foundations for a healthy planet and an intact ecosystem. Germany will do its part. Thank you very much, Minister for Environment, Republic of Germany, for your great message. और इसके साथ ही आज के इस पहले सेशन का इख्तिताम होता है, लेकिन दूसरा सेशन थोड़ी ही देर में शुरू होगा। और आप लोगों का जज्बा कैसा है? जज्बा है? माशाल्लाह, आप ही खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जुनून बैंड का एक खूबसूरत कलाम सुनेंगे हम, और आप सब उस कलाम को एंजॉय कीजिए। और थोड़ी ही देर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमारे बीच मौजूद होंगे। और दूसरे सेशन में हमारे पास मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना केस स्टडी जो है वो शेयर करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले और अब पूरे पाकिस्तान में जो दरख्त लगाने की जो मुहिम है वो शुरू कर रखी है, उसके हवाले से, और यूएन के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और आगे का जो लाएअमल है वो भी सामने रखेगा पाकिस्तान दुनिया भर के। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो जुनून बैंड का ये कलाम आइए हम मिल के सुनते हैं। और हाथ ऊपर, फॉरेस्ट गार्ड स्पेशली आप लोग।
चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, ओ पंजवा बालन, पंजवा बालन आयो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हिट वगे दरे आओ बला झूले लालन, ओ हिट वगे हाय हिट वगे दरे आओ बला झूले लालन, सुंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर बसे दम दम दे अंदर, तमातम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर बसे दम दम दे अंदर, तमातम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तमातम मस्त कलंदर बसे दम दम दे अंदर, तमातम मस्त कलंदर बसे नस नस दे अंदर, तमातम मस्त कलंदर, तमातम मस्त कलंदर, तमातम मस्त कलंदर, तमातम मस्त कलंदर। दहकान भी हम इसके अल्लाह की रजा से हैं, निगहबान भी हम इसके अल्लाह की रजा से हैं, निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं, निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक तारीखी दिन है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला कि पाकिस्तान माहौलियात का जो आलमी दिन है इसकी मेज़बानी करे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, और यकीनी तौर पे जहां इसका क्रेडिट हमारी लीडरशिप, हमारे चेयरमैन, हमारे वजीर आजम, हमारे लीडर इमरान खान साहब को जाता है, उससे कहीं ज्यादा इसका क्रेडिट आपको जाता है। ये जो फॉरेस्ट, हमारे गार्ड्स, फॉरेस्ट की टीम, पूरी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की टीम, खैबर पख्तूनख्वा की टीम, आप सबको जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस पुरवकार तकरीब का, जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक में। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में आप खड़े हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan। अब तलावत कुरान हकीम और सूरह रहमान की कुछ वर्सेस यहाँ पे आप समात करेंगे, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। Then which of the favors of your Lord will you deny? सूरह रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। والأرض وضعها للأنام और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। والحب ذو العصف والريحان और अनाज जिसके साथ घुस होता है और खुशबूदार फूल। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो ए गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। صدق الله العظيم।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो इसलिए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब मिल के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So we'll formally start the second session of the World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to all. It's a great honor for Pakistan to host this World Environment Day for the first time in our history. Pakistan has a great story to tell to the world, that how did it become the first country in the world to meet the international bond challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forest, and planted over 1 billion trees in the KP province, and now planting 10 billion trees across the country, 1 billion out of which has already been planted. Prime Minister Imran Khan has become a strong voice globally for this great cause of fighting climate change and making this planet a better place for generations to come. Pakistan has also passed a crucial milestone on the road to environmental protection by meeting the UN climate goals a decade before the deadline. इस पे तालियां होनी चाहिए. So Prime Minister Imran Khan's vision of clean and green Pakistan is being implemented quite effectively, and we really need to make more and more efforts together for the green development. We would like to thank United Nations Environment Program for giving us this opportunity to host this year's World Environment Day. Theme for this year is ecosystem restoration. The theme for this year, World Environment Day, is ecosystem restoration, with focus on resetting our relationship with nature. Today, Pakistan marks the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 to 2030. We will watch your video package on Pakistan's climate change, efforts of Pakistan to fight climate change. A video package, ये देश हमारा है. ये देश हमारा है. We planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए. मजबूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं, निगहबान भी हम इसके. ये एक अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए. अब ये वक्त है कि आपको जो यूथ है पाकिस्तान की, जो हमारा नौजवान है, वो अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले. हमारी हुकूमत आपके साथ मिलके ये सारे पाकिस्तान को बिल्कुल एक हरा पाकिस्तान बना देगी.
रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है। निगहबान भी हम इसके। अच्छा, तो हमारा फिर ये थीम भी है कि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक जर्रा हमें अपनी जान से प्यारा है। हम सब ने मिल के इस मुल्क का ख्याल रखना है। और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है ये बहुत काम कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा अब स्टेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि रूरल एरिया से इलेक्टेड हैं और आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी। मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। प्लीज़ वेलकम द स्टेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जरताज गुल। भी हम इसके, मजबूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके। शुक्रिया, शुक्रिया। Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you acquit yourself. सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, ज़मीन सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत है और अल्लाह ताला ने तुम्हें यानी बने हुए इंसान को इसका निगहबान ठहराया है और वो देखेगा कि तुम अपने इस जिम्मेदारी से कैसे मुबर्रा होते हो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे SCPM मलिक अमीन असलम साहब, डिग्नेटरीज, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। बेशक आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम वर्ल्ड UN एनवायरनमेंट डे की 5 जून को मेज़बानी कर रहे हैं और इसकी अहमियत 2 वजह से है। पहला ये कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के उस लिस्ट में शामिल है जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। दूसरा कि किस तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में और उनकी जो एक पर्सनल कमिटमेंट है, विजन है, जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने दिए हैं, किस तरह हम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ रहे हैं। अगर मैं शुरू करूं 10 बिलियन ट्री सुनामी से, तो 10 बिलियन ट्री सुनामी में हम 85,000 जॉब्स दे चुके हैं, मज़ीद देना चाहते हैं, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हम करना चाहते हैं। इसके अलावा 1 अरब दरख्त हम लगा चुके हैं और 9 अरब दरख्त लगाने की हम तैयारी कर चुके हैं। दूसरा बड़ा हमारा इनिशिएटिव क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ये बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी मूवमेंट है जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर तमाम लोगों को ये कह रहा है कि आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर आपके अपने हैं। आप लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ बटाइए और अपने हिस्से का काम कीजिए। ये अवेयरनेस का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हमारा तीसरा बड़ा इनिशिएटिव ई व्हीकल पॉलिसी, जिसमें हमने दुनिया से वादा किया है कि हम अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपनी गाड़ियों को 2030 तक 30% यानी बिजली के ऊपर हम इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करेंगे और जिसके डिज़ाइन आपने यहाँ पे बाहर देखे हुए हैं। इससे हमारी एमिशंस भी कंट्रोल होंगी। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव रिचार्ज पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर साल बारिशों का पानी ज़ाया हो जाता है और सैलाब के ख़तरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थर में और बलूचिस्तान में हमारा पानी 1200 फुट से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से खुश्क साली और कहत साली शुरू हो गई है। तो लिहाजा हम सैलाब के पानी को और अपने बारिश के पानी को तबाहकारी के बजाय अपने एसेट्स के अंदर चेंज करें और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो रिचार्ज पाकिस्तान में, जिसमें हम डिप्लीशन ऑफ वाटर के बजाय अपनी वाटर टेबल को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। हमारा अगला प्रोग्राम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे रिसोर्स कम हो रहे हैं। हम साउथ पंजाब में और सिंध में फूड सिक्योरिटी और फाव के साथ मिलकर अपने फूड सिक्योरिटी के थ्रेट को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसका PC1 अप्रूव हो चुका है। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव, जिसकी आज थीम भी है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हमने 23 नेशनल पार्क कंजर्व किए। तारीख के सबसे बड़ी हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह न पोचिंग की इजाज़त देते हैं, न हम हंटिंग की इजाज़त देते हैं, बल्कि उसको हम अपने इको टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज जो है वहाँ पे इकोनॉमी होगी। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे नौजवानों के बारे में जो बात की कि हमारी जो यूथ है उसकी 60% की जो तादाद है वो 30 साल से कम है। हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके लिए मौसमियाती तब्दीलियों के ये पैकेज लेकर आ रहे हैं उसमें आप हमारा हिस्सा बटाइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। वो वोट बैंक का नहीं सोचते हैं, वो फीते काटने का नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ पाकिस्तान का सोचते हैं। तो हम ऐसे लेजिस्लेटर पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आ रहे हैं T20 यानी T20 लेजिस्लेशन के जरिए हमारे नौजवान तैयार रहे कि वो इंशाल्लाह 20 तरह अपने ग्रेजुएशन में और अपनी मास्टर डिग्री में वो लगाएंगे और उसके एवज इंशाल्लाह उनको ग्रीन मार्क्स या 20 एक्स्ट्रा मार्क्स उनके सिलेबस में उनको मिलेंगे। मैं आखिर में अपना केस इस बात के ऊपर ख़त्म करके जा रही हूँ कि ये ठीक है कि हमें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये भी ठीक है कि हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है और हमारी खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और सैलाब हर रोज़ पाकिस्तान में आए होते हैं। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से और मौसम की सख्ती की वजह से जो लोग नकल मकानी करते हैं, जो अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होता है? 2010 में डेरा गाजी खान में और पूरे पाकिस्तान में जो सुपर फ्लड या सैलाब आया, उसमें डेरा गाजी खान में सिर्फ दरियाए सीन में 30 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए। उसमें सबसे ज़्यादा वो खातून जो अपने बच्चों की हिफाजत भी कर रही थी और किफ़ालत भी कर रही थी और उसको अपनी बेपर्दगी का भी ख्याल रखना था, क्योंकि हमारे यहाँ सख्त पर्दा सिस्टम है और इसके बावजूद जो वो अपने बच्चों की किफ़ालत करती थी, खुले आसमान तले रहती थी और जो उसकी ज़रूरियात थी वो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के किसी मर्द को नहीं पता। जब उसकी बारी आती थी रिलीफ की, जब उसको मदद की बारी आती थी तो उसको कहते थे कि बीबी जाके पिछली और आखिरी लाइन में खड़ी हो जाओ या अपने घर के किसी मर्द या सरबराह को भेजो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं चाहती हूँ कि हमारा मुकदमा और हमारी एडवोकेसी आप लड़ें, दुनिया को ये कहें कि आपकी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, आपकी एमिशंस की वजह से, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जिंदगी मुतासर हो रही है और हमारा माहौल भी खराब हो रहा है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप हमारा मुकदमा दुनिया में लड़े, साउथ एशिया की फर्स्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन पॉलिसी लेकर आएं और खवातीन को उनके हिस्से का रोल और रिलीफ दीजिए। आई रेस्ट माई केस। आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Zartaj. Moving on, we have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borje Branda. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment. A very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borje Branda. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 of the world will be living under water shortages. And by 2050, global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%.
Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's 1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation, act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs. And we must embrace and support their solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030, we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Thank you, President of the World Economic Forum, Mr. Borje Brenda, for your message. Now we are privileged to have with us Inger Anderson. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management,
biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Program, Inger Anderson. Well, thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Ministry of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution. It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems. We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way. The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all. I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court
and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do: backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks. And we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments. And I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you, Inger Anderson, for being with us. आगे बढ़ते हैं, बलोचिस्तान से एक ज़बरदस्त बैंड तशरीफ़ लाया है। आपकी बड़ी मेहरबानी कादर चनाल ज़हरी साहब और आपकी जो टीम है, वो आज माहौलियात का जो आलमी दिन है, इसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश करेंगे। आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं कादर चनाल ज़हरी और उनकी टीम from Balochistan to perform a theme song on World Environment Day 2021. तालियां। बले 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 लश्कर सलाम अलैकुम उम्मीद के व खैर खुशियत मरोरे बाबो लश्कर तेना पीरो डाडा ना पिनट हसिया से दरख्त कलीन ना नोफ्ता खलो का दरख्ता ता से खाटी तू सुनुन बरो का पीड़ी नना खलो का दरख्ता ता से खाटी तू दे ताकि सरसब्ज मरे नना ज़ेबागा बलोचिस्तान जीवात तरा बलोचिस्तान जीवात तरा
के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो। लष्कर न्यालाता भारतीय जीवात्रा बलूचिस्तान, जीवात्रा तरक्की। सब्जा सब्जा वतन की ये सारी जमीन, सब्जा सब्जा वतन की ये सारी जमीन, हर हंसी दिलरुबा से ये प्यारी जमीन। पाके सर इस जमीन को सजाते चलो, पाके सर इस जमीन को सजाते चलो। दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो। दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो। अपनी धरती से दलदल मिटा देंगे हम, अपने खेतों से खुशबू उगा देंगे हम। पाक जज्बों से जन्नत बनाते चलो, गाते चलो, मुस्कुराते चलो। दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो। जीवात्रा बलूचिस्तान, जीवात्रा शाला सरसब्जो शादाब बिबे। Baba doliya to bashmat sune, Baba opta asi arman se, Baba opta asi arman se, Baba bola nanat meran ka, Baba mutta nanat mardan ka, Baba khat mare mujada, Baba zeba watanna mashkala, Baba andana yar manare, Baba andana yar manare, dono khat Pakistan mare. बहुत बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां बलूचिस्तान से आए हमारे भाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे। नाउ वी हैव अ मैसेज फ्रॉम द UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres. I am pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger.
United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. Now moving on, I would like to invite Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on climate change, and under the leadership of Imran Khan, Malik Amin. Aslam has previously championed the flagship Green Growth Initiative for the KP province and now leading the 10 billion tree project for the entire country. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं Malik Amin Aslam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. इस अगले 10 साल के अंदर तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये 10 साल इस दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है और माहौल को अपना दोस्त बना के चलना है. और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है. और इसी को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं. और आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि दुनिया के लिए हम इंशाल्लाह सामने पेश कर रहे हैं. फ़िलॉसफी हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की ये है कि हमने जहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है. और अल्लाह के फजल से अभी तक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें 85,000 जॉब्स दी गई हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उसके अंदर 2 लाख जॉब्स का इजाफा करेंगे. और वो 4 इनिशिएटिव्स जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है उसके अंदर आज हम मेजर अनाउंसमेंट्स ये कर रहे हैं कि जो 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है. और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने अपने ऊपर लिया है. इसका हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने हमें इस पे जोर नहीं लगाया कि आप ये चैलेंज लें. ये चैलेंज हमने अपनी और अपनी नस्लों के लिए लिया है, लेकिन इससे दुनिया को भी फायदा है. इसी तरह और वो हमने रजिस्टर करा दिया है, कल हमें उसकी कंफर्मेशन मिल गई है. दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं. जहां पर कोविड के अंदर तमाम दुनिया इस परेशानी में मुब्तला थी कि इसका मुकाबला कैसे करना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ग्रीन स्टिमुलस लॉन्च कर दिया जिससे लोगों को नौकरियां मिली. नए नेशनल पार्क हमने बनाना शुरू किए और आज हमने पिछले 1 साल के अंदर 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं. और उसके साथ साथ हम नेशनल पार्क सर्विस लॉन्च करने लगे हैं जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते की. उसकी एकेडमी हम बलूचिस्तान ज़ियारत में बना रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद हम 5,000 यूथ को नेशनल पार्क्स के अंदर नौकरी देंगे. अगेन हमने नेचर भी प्रोटेक्ट किया और साथ नौकरियां भी फराम की हैं. तीसरा हमारा जो इनिशिएटिव है रिचार्ज पाकिस्तान. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है और एक नेमत पानी है पाकिस्तान की. यहाँ पर हर साल एक सैलाबी रेला आता है और जो तबाही फेर के चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम पानी को तरस रहे होते हैं. तो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट किया है कि रिवर इंडस के लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर 15 ऐसी वेटलैंड्स हैं, ऐसी नेचुरल लेक्स हैं जो कि तबाह हो रही हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बीच में से पानी गुजर के चला जाता है.
तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम उस सैलाबी रेले को जब वो आएगा तो उसको हम डाइवर्ट करेंगे उन वेटलैंड्स की तरफ। उससे ना सिर्फ वो वेटलैंड जिंदा हो जाएंगी बल्कि जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो जिंदा हो जाएगा। ये रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसके लिए 1 अरब रुपया इस साल मुख्तस किया गया है और 2 पायलट साइट्स के ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। और चौथा और आखिरी हमारा इनिशिएटिव ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर है। ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया में जिद्दत आ रही है फाइनेंसिंग के ऊपर कि ये जो तमाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं इनका पैसा कौन देगा। हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिखाया है कि व्हेन यू ड्रीम डोंट वरी अबाउट योर वॉलेट, कि जब आप ख्वाब देखें तो फिर ये ना सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, आ जाते हैं पैसे, नीयत साफ हो और आपकी कमिटमेंट हो। और हमने यही देखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बिलियन ट्री में भी देखा है और अब 10 बिलियन ट्री में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जिद्दत हमने भी की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जो दुनिया ने 3 बड़े इनिशिएटिव किए हैं। ग्रीन बॉन्ड, वो पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते वापडा ने लॉन्च किया $500 मिलियन का, और जब 500 मिलियन हमने दुनिया से मांगे डॉलर तो दुनिया ने हमें जवाब दिया कि आप 3 अरब ले लें हमसे। ये पाकिस्तान की ग्रीन क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। इसी तरह हमने ब्लू बॉन्ड पहला इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रिपोर्ट पेश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ऐसा खजाना है पाकिस्तान के मैंग्रोव्स जो कार्बन बचाते हैं उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है जो तकरीबन आधे अरब डॉलर के बराबर है, उसको कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू बॉन्ड। और फिर तीसरा जो नेचर बॉन्ड जो भी इंगर एंडरसन ने बात की यूनेप की कि नेचर बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब उन्होंने बात की कि कौन सा मुल्क पायलट करेगा तो सब मुल्क झिझक रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और कहा कि हम पायलट करेंगे दुनिया के लिए। और आज पाकिस्तान के साथ 3 ममालिक की बातचीत चल रही है और इसके अंदर ये होगा कि जो नेचर में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको आपकी डेट या कर्जे माफ़ करके वो आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये वो जिद्दत है जो पाकिस्तान में हो रही है और इंशाल्लाह ये दुनिया के लिए भी कीमती है और पाकिस्तान के लिए भी कीमती है। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज for Pakistan to be hosting this World Environment Day, which is at the moment streaming live all over the world. And we have a lot of viewership looking at Pakistan to see what Pakistan is doing for the World Environment Day. And our message to the world is that we have trusted in nature and nature has paid back to us. And our message is that the world needs to trust in nature and it is time for nature. Thank you very much. What I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. We started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. 30,000 हम लोगों ने पौधे लगाए, 20 खवातीन ने। अब हम लोग खवातीन जो है वो मर्दों के शाना पे शाना काम कर रहे हैं। ये बलोच औरतें जाकर निगरानियां करती हैं, ऊँटों को भगाती हैं, बकरियों को भगाती हैं, उनकी नस्ल जो पौधों को खत्म नहीं करती और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहला तिमिर ना परो अब तो पहला कसा न चारता अनु इब्राहिम का नंबर रोजगार दाता अम्मा जिंदगी भर में शिक्याला भी कनो जैनानी पैगाम आदे हां शिमा भी मेहनत कने शिमा भी पुच्चा दस्ता सिलाई कने और गरीब क्याला गरीब राने मन नाना वरगा मिर्ची आई के सांगार नहीं है, आटा नहीं है, जा उसको भी 2 रोटी दो। हम लोग खुद गरीब है, हमारा दिल अमीर है। जहाँ पे हम लोग मैंगोस की सीडिंग करते हैं, सीडिंग के बाद यहाँ पे एक पौधा ग्रो करता है जो घना जंगल बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी प्रोडक्शन होती है, ये फॉरेस्ट की भी प्रोडक्शन होती है। ये फॉरेस्ट फिर बाद में बर्ड्स के लिए भी एक होम टाउन बन जाता है। छोटी मछलियाँ यहाँ बड़े समंदर में चली जाती है तो वहाँ पे लोकल माहीगीर के लिए सस्टेनेबल फिशिंग का जरिया भी बन जाता है। यहाँ पे मैं ये जंगली जानवर हैं इनकी हिफाजत करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मेरा घर भी यहाँ पे है और मेरा ड्यूटी भी यहाँ पे है। मेरा जो जिम्मेदारी है जानवरों की हिफाजत
करना, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको तंग ना करे। इधर नर्सियों में 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ 8-10 लड़कियाँ भी काम करती हैं और इधर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा निज़ाम चलता है। अब मैं खुद 2 यूनिट नर्सिंग की मालिक हूँ। We involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We involved women in mountainous areas to grow nurseries, and it became one of the most successful campaigns in our country's history. We are honored to have with us the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Mr. Boris Johnson. He has urged the world leaders to step up with the plans for fighting climate change this decade. He is also going to chair the UN Climate Change Conference of the Parties in Glasgow, November this year. Please put your hands together for the Prime Minister of the UK, His Excellency Boris Johnson. On World Environment Day, I know that everybody is still focused on the global pandemic, coronavirus that we've been struggling with. But be in no doubt what this pandemic is. It is Mother Nature's revenge upon humanity for our failure to keep in balance with the natural world. That's what a zoonotic plague like COVID is. Jumping the species barrier because of the way we farm wild animals, because of the way we treat the natural world. And that plague, coronavirus, is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat climate change. Anthropogenic climate change that is driven once again by our actions and our activity. We need to redouble our efforts to control the rise in temperature, to keep it at 1.5 degrees. That means we all have to make massive commitments to transforming our economy and getting back in balance with nature. And I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, a huge campaign of forestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove. Thank you, Prime Minister. There was some technical error. I'll check that. Moving. So we'll move on. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador. His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon.
On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential for the prosperity of civilization. It is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and the development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation, and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation, China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature, and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. लगे है शजर तो धरती को मेरी सांस आई है, माहौल दोस्ती मेरे वतन को रास आई है। जो थी बंजर जमी अब सब्ज जंगल पैरहन इसके, हुए आलूदगी से पाक दरियाओ कोहन इसके। कहत से हो की आजादी न ही सैलाब आएंगे, हर एक सू फूलो फल होंगे, परिंदे चहचहाएंगे। चलो मिलकर करें ऐसा,
अंधेरा ना रहे बाकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है, लेकिन वो आँख चाहिए थी कदर करने वाली कि इन कुदरती वसाइल का ख्याल भी रखें और नेचर की कदर भी करें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। तो अल्लामा इकबाल ने इसको एक शेर में तमाम कर दिया है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो दीदावर, वो आँख, वो देखने वाला, कदर करने वाला अल्लाह की नेमतों का और उनसे फ़ायदा उठाने वाला वो लीडर, वो है इमरान खान। और तेरे रंग रंग मौला रंग रंग, कितना खूबसूरत है ये वतन, कितना खूबसूरत है ये पाकिस्तान। तो अबरारुल हक साहब, आप ज़रा आइए, तशरीफ़ लाइए और हमें बताइए कि मौला तेरे कितने रंग हैं, तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया भी बोलूँगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की टीम का, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की टीम का और फॉरेस्ट गार्ड्स का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ये जो वीडियो अभी आपने देखी थी उसकी तैयारी पर हमारी जो डिजिटल मीडिया विंग है, हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके पुरजोर तालियों में वेलकम कीजिएगा अबरारुल हक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारकबाद। एक सेकंड के लिए इसको अगर बंद कर दें। वज़ीर आज़म साहब, मैं ये सोच रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हमें एक ऐसा लीडर मिला जो जनरेशन्स की सोच रहा है, जो सैलाब रोकने की सोच रहा है, एकोसिस्टम की सोच रहा है। और मुझे वो लोग भी याद आ रहे थे जो सैलाब में लॉन्ग शूज़ पहन के उस वक्त सिर्फ तस्वीर खिंचवाते थे। अल्लाह ताला उम्मीद है ऐसा विजन बरकरार रखेगा और ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। और आज दुनिया में जो इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान को कि हम होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस तरह के और बहुत सारे डेज होस्ट करने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर विजन इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग वाला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग हर सू से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरिया के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग
सा नि सा रे मा गा सा रे सा नि सा रे पा मा सा मा मा पा मा पा पा नि पा नि नि सा सा रे रे मा सा रे नि नि सा पा नि मा पा नि सा रे सा नि पा मा नि पा मा गा रे सा। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं। तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं। तेरा नाम भी लेना याद नहीं। तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। वे भुलिया सा मरना नहीं गौर पया कोई हो, 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 गौर पया कोई हो। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन। की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। वे भुलिया सा मरना नहीं गौर पया कोई हो, गौर पया कोई हो, गौर पया कोई हो, गौर पया कोई हो। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग। बहुत बहुत शुक्रिया अबरारुल हक के लिए भरपूर तालियां। जो एक रवायती सियासतदान होता है उसका सारा जो महवर होता है वो सिर्फ अगला इलेक्शन होता है, लेकिन जो एक लीडर होता है उसका फोकस अगला इलेक्शन नहीं, अगली जनरेशन होता है। We are fortunate to have a leader in Imran Khan who has this great vision of making this planet a better place to live for generations to come. Thank you, Imran Khan, for leading this great cause. May the Almighty help you all the way. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Pakistan, His Excellency Imran Khan. पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वजीर आजम इमरान खान हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
मैं आज इसको एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का। और मैं अपने मुल्क के लिए खुश हूँ इसलिए कि बड़ी जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फ़िक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए, और लिहाजा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जहान छोड़ने की जो वो कोशिश कर रहा है वो एक्नॉलेज की गई हैं। तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी है। मैं अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बड़ा ज़रूरी है हम सबको समझना, क्योंकि वो दुनिया की तारीख़ में कभी भी ऐसा लीडर ना आया था ना आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगली दुनिया के लिए ऐसे जियो कि तुमने कल मर जाना है। अपने अमाल इतने अच्छे करो कि तुम्हें सारा फिक्र होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो इस तरह करो कि तुम आज से अपने अमाल ठीक करो। लेकिन दूसरी दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। यानी जो भी आज इस दुनिया पे आप कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आने वाली नस्लों पे क्या होगा, आपको मुसलसल सोचना चाहिए। और एक कुरान की आयत है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कि कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि आपकी जब अल्लाह की ज़मीन पे आप कदम रखते हैं तो आपको फ़िक्र करनी चाहिए कि आप जो भी उसकी ज़मीन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बदकिस्मती से ना दुनिया में इसके ऊपर तवज्जो दी गई। कई मुल्कों ने दुनिया में बड़ी तवज्जो दी शुरू से। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। लेकिन कई मुल्कों को इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। आप ये सोचें कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं असेस कर रहा था 2000 जब हमने 1 अरब दरख्त लगाने का फ़ैसला किया पख्तूनख्वा में, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो सारी हमारी तारीख़ में 64 करोड़ दरख्त लगाए गए थे। जितनी भी हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थी, टोटल दरख्त हमने 64 करोड़ लगाए थे। तो हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। लेकिन यही नहीं तकलीफ दह चीज़, जो पुराने हमारे जंगल थे, जो बचपन में मैं जाया करता था, मुझे मेरे कज़न, मेरे बड़े लेके जाया करते थे। छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदिया का मियाँवाली में बड़ा जंगल था, चीचावती में, दीपालपुर, ये सारे जंगल पुराने बने हुए थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए। तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि कितना बड़ा हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए असास है हमारे जंगल। और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए, हमारे दरियाओं को पोल्यूट किया गया कि बेदर्दी से। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे ज़मान पाक के बाहर जो नहर है, वो मैंने आप लोगों को देखा हुआ कि आम साइकिल पे जा रहे होते थे, गर्मियों में लोग उतर के नहर का पानी पीते थे। आपको तसव्वुर भी नहीं, अब नहर का पानी तो छोड़ो, नलके का पानी ठीक नहीं है। और जो लाहौर था सिटी ऑफ गार्डन्स, आज उसके जो पोल्यूशन रेट्स हैं वो किधर से किधर पहुंच चुके हैं, डेंजर लेवल से कई ऊपर चले गए। लेकिन ये भी है कि अल्लाह ने हमें हमेशा मौका देता है कि हम अपना कोर्स करेक्ट कर लें, अपना रास्ता ठीक कर लें। तो ये दुनिया को एक मौका है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का इकोसिस्टम, डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन,
कि 10 साल हम कोशिश करेंगे अपना जो इकोसिस्टम है जिसमें सब कुछ है, माहौलियात है, दरख्त हैं, सब कुछ है, पानी है, हम इसको ठीक करें। ये याद रखें कि अल्लाह हमें हमेशा मौका देता है, क्योंकि वो रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला खुदा है। वो हमेशा आपको रास्ता देता है कि ठीक है, अपना रास्ता ठीक करो। हमारे लिए ये मौका है, ये 10 साल, ये 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है। जो एक मुकाबला चल रहा है दुनिया में, एक तरफ है हवस, ग्रीड, दूसरी तरफ है इंसानियत। इसका बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस खो जाता है, जब कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन, ग्रीड उस लेवल पे पहुंच जाती है, उसका हमेशा मनफी असरात इंसानियत को फेस करने पड़ते हैं। ये जो भी बोरिस जॉनसन ने कहा, वो जो वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ की समझ आई, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन उसने क्या कहा? उसने भी यही बात की कि हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। तो जो हम कर रहे हैं, मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता दूं, हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो जो ये कार्बन एमिशंस के अंदर जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिस्क्यूल है, ना होने के बराबर है, 1% से भी नीचे है। हमारी 22 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारी 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में हमारा रोल है। उसके बावजूद हमने फैसला किया कि हम अपने मुल्क के अंदर कोशिश करेंगे कि हम जो भी हम कर सकते हैं, हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके मनफी असरात हैं, जो सबसे बड़ी बात की जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, कि पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जब हमारा पानी चोरी हो गया, ये कहता है हमें कम पानी मिल रहा है। तो ये आगे जाके अगर हम अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे हैं। कई हम कंट्रोल कर सकते हैं, कई जब तक दुनिया इसके अंदर एक्शन नहीं लेती तो फिर भी हम इतना ज़्यादा हमारी जितनी भी एफर्ट है उसका कम असर होगा। ये याद रखें कि जो पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा 80% पानी दरियाओं में ग्लेशियर्स से आता है, और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मुतासर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इससे आगे जाके हम तो जितना करेंगे, और वो हमें करना चाहिए, इंसान को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन दुनिया को भी अगर इसके ऊपर जो कार्बन एमिशंस के ऊपर जो टारगेट सेट किए हुए हैं, वो अभी से इसके ऊपर काम ना किया गया। और शुक्र है कि ये कोरोना वायरस का, ये कोविड का एक जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि दुनिया को एकदम एहसास हुआ है कि दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। ये अब नहीं कर सकते कि मैं अपने बॉर्डर बंद कर दूं तो मैं बच जाऊंगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बॉर्डर्स का ध्यान नहीं रखती, जिस तरह कोरोना वायरस थी, और ना ही ये ध्यान रखेगी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके असरात सारी दुनिया पे पड़ेंगे। लेकिन उन मुल्कों के ऊपर जिनका पानी डिपेंड करता है ग्लेशियर्स के ऊपर, उनके ऊपर बहुत बुरा इसका इफेक्ट जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तो एक मुल्क है। हिंदुस्तान जो सारा उनके हिमालय से जो उनके ग्लेशियर से पानी आता है, गैंजीज के अंदर, ब्रह्मपुत्रा में, 2 बड़े दरिया सिस्टम्स जो हैं उनके, वो मुतासर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ, पहाड़ों के दूसरी तरफ किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर नीचे उज़्बेकिस्तान, क्योंकि उनका भी उधर से पानी आता है ग्लेशियर से, वो सारा इलाका मुतासर होगा उसके साथ। अभी से जो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हुए थे वो बता रहे थे कि 1000 ग्लेशियर उनके पिघल चुके हैं। तो इसलिए ये बड़ा एक सीरियस इशू है। 20 साल पहले जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती तो लोग मजाक उड़ाते थे लोगों का। मैंने खुद सुना हुआ है लोगों को, जब कई एनवायरमेंटलिस्ट कहते थे कि मौसम गर्म हो रहा है तो सब मजाक उड़ाते थे। अभी भी, पिछले कई सालों पहले भी मजाक उड़ता रहा लोगों का। लेकिन अब दुनिया रियलाइज कर रही है उसका इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट चेंज है। जो मसलन फिलीपींस, उनके प्रेसिडेंट कहीं मिले थे बीजिंग में,
तो वो उनका तो मुल्क में हर दूसरे दिन ना कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई टाइफून आ रहा है, हरिकेन्स आ रही हैं, तो जो नुकसान आता अब उसके, और कई और मुल्क फेस कर रहे हैं ये जो क्लाइमेट, ये जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो लिहाजा पहले तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें खुद, अगर दुनिया नहीं करती तो क्या हमने कुछ नहीं करना? नहीं, पाकिस्तान ने, और अल्लाह का शुक्र है कि एक्नॉलेज भी किया कि जो पाकिस्तान ने अब तक किया। हमने आगे क्या करना है? हमने अब तक 1 अरब दरख्त लगाए पख्तूनख्वा में पहले, और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे अपने फॉरेस्ट गार्ड जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि जो टिम्बर माफिया जिसने तबाही की, जिसने कई हमारे पख्तूनख्वा के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज़ में जंगलात ख़त्म करके रख दिए। काराकोरम हाईवे पे एक दफ़ा मैं 25 साल पहले आ रहा था, कोई 50 साल तक 50 किलोमीटर तक दरख्त कटे हुए पड़े हुए थे। तो ये टिम्बर माफिया इतना ताकतवर था, कोई पॉलिटिशियन उसे कुछ नहीं करता था। तो पहली दफ़ा पख्तूनख्वा में हमने उनका मुकाबला किया और कुर्बानियाँ दी। हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स ने 10 हमारे फॉरेस्ट गार्ड शहीद हुए इनका मुकाबला करते हुए। आखिर में हमने उनकी कमर तोड़ी और पख्तूनख्वा इसलिए कामयाब हुआ 1 अरब दरख्त उगाने के लिए। अब हमारा जो दूसरा चैलेंज है, हमने 10 अरब दरख्त का फ़ैसला किया उगाने में, और मुझे बड़ी खुशी है कि 1 अरब दरख्त का जो जिससे 1 अरब दरख्त पूरा किया था वो मैंने अभी मरगला में प्लांट किया, तो हमारा 1 अरब दरख्त पूरा हो गया। ये जो 10 बिलियन जो दूसरा वाला हमारा जा रहे हैं, 9 अरब रह गए हैं। इसकी कामयाबी के अंदर जब तक सारी कौम मिलके इस चीज़ का एहसास नहीं करेगी कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे सबको। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्कूल की टीचर्स, मैं सारे पाकिस्तान की टीचर्स को ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूलों के अंदर आप बच्चों को शुरू से बताना शुरू करें कि अहमियत क्या है दरख्तों की, क्यों हमें अपने घर में, शहर में, जिधर जगह मिले, क्यों हमें दरख्त उगाना है, क्यों उनके मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम कामयाब हो गए 10 अरब में, तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ेगा, मुल्क पे पड़ेगा, सारा जो हमारी इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ यही नहीं कि दरख्त उगाते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, पानी रिटेन करता है दरख्त, आगे जो पानी के हमें मसले आ रहे हैं उसमें हमारी मदद करेगा, मौसम को साफ करेगा, ऑक्सीजन जो सप्लाई जाती है उससे जो हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है उसको काउंटर करेगा, और फिर वाइल्ड लाइफ, बर्ड लाइफ, ये सारा एक पूरा इकोसिस्टम रिस्टोर होगा। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ज़रूरत यह है कि सारा मुल्क इसमें शामिल हो। ये कभी भी कोई गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, कौम मिलके ये जंग जीत सकती है। और जो मैंने देखा पख्तूनख्वा के अंदर, पहले 2 साल कोई रिस्पांस नहीं था, तीसरे साल थोड़ा सा आया, और चौथे और 5वें साल एक बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई और सब शामिल हो गए उसके अंदर। तो मैं अब चाहता हूं कि हम ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर हम सारी कौम को इन्वॉल्व करें, ख़ास तौर पे जो हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है, हम दुनिया में दूसरा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। मसलन चाइना को बड़ा प्रॉब्लम है, उनके बूढ़े हो गए लोग, उन्होंने अब कहा कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। हम कोशिश करें बच्चे कम पैदा करें क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा जो यंग पॉपुलेशन है उसकी ये बहुत बड़ी, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक एसेट में कि वो हमारे शामिल हो। ये जो सारी हमारा जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के अंदर, उसके अंदर पूरी तरह हमारे यूथ की पूरी कंट्रीब्यूशन हो, बच्चों की कंट्रीब्यूशन हो, और अवेयरनेस शुरू से ही हो जाए। मैंने ये देखा था कि कई यूरोपियन मुल्कों में स्कूल से बच्चों को पूरा एहसास होता है एनवायरनमेंट का, बच्चे प्रेशर डालते हैं बड़ों के ऊपर कि आप हमारे मुस्तकबिल के लिए आपको एनवायरनमेट का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं 10 बिलियन ट्री के अलावा, जो ये वेटलैंड, ये जो रिचार्ज पाकिस्तान, हमारा क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव, और मैं अमीन असलम आपको इसकी दाद देता हूँ कि जो हमारा फ्लड वाटर्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इन्हीं फ्लड वाटर्स को हम, ये जो हमारी वेटलैंड्स हैं, मसलन लेक्स हैं,
इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं और इनको डाइवर्ट कर सकते हैं। जब फ्लड का पानी है तो वहाँ भी पानी स्टोर हो जाएगा और वो पानी फिर नीचे सीप करता है, ग्राउंड लेवल भी हमारा एक्वाफर भी बाकायदा रिजुविनेट होता जाएगा। तो उसके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। फिर जो मरीन लाइफ है, हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है उधर। फिर ये जो अभी आपने देखा भी जो मैंग्रोव्स हैं, इनकी रीजनरेशन के ऊपर काम हो रहा है। और ये याद रखें कि मैंग्रोव की ख़ासियत ये है कि वो कार्बन अब्जॉर्ब करती है सबसे ज़्यादा, तो वो इन्वायरमेंटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो मैंग्रोव्स के ऊपर दुनिया में कम हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मैंग्रोव्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर जो हमें सबको कोशिश करनी है वो ये कि हम लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट करें, यानी लोगों की जो मुकामी लोग हैं, ये याद रखें भूखे लोग इन्वायरमेंट की परवाह नहीं करेंगे। अगर मैं भूखा हूँ, मुझे क्या, मैं पहले तो सोचूंगा अपना पेट पालने का, मुझे क्या फ़र्क अगर मैं भूखा मर रहा हूँ कि दरख्त लगते हैं या नहीं लगते। सो जो मुकामी लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जो अमीन असलम आपने ग्रीन जॉब्स की बात की कि हम उनको स्टेक दें इसके अंदर। जो अभी आपने दिखाया कि ख़वातीन पहाड़ी इलाकों के अंदर नर्सरीज उगा रही हैं और उनको फिर पैसे मिलते हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वहाँ के मुकामी नौजवान हैं, उनको फिर फॉरेस्ट गार्ड्स बनाएं, उनकी जिम्मेदारी दें, उनमें से सिलेक्ट करें। क्योंकि अब हमने 15 नए नेशनल पार्क्स बना दिए हैं और ये नेशनल पार्क्स इनको जो प्रिजर्व करेंगे, जो ट्रेनिंग करनी है, आपने कोयटा का बताया जो ज़ियारत के अंदर स्कूल बनाया है, ये नेशनल पार्क्स के लिए स्पेशल गार्ड्स आपको चाहिए। और इनकी भी जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, इनकी भी नफरी बढ़ानी पड़ेगी, इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इससे फिर जब मुकामी लोगों को फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा कि इको टूरिज़म बढ़ जाएगी। तो जब मुकामी लोग देखेंगे कि दरख्त बचाने से, इलाकों को प्रिजर्व करने से उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं, तो फिर वो स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आईबैक्स था वो ख़त्म होता जा रहा था तकरीबन। आईबैक्स जो आप नहीं जानते कि ख़ास ये हिरन की तरह का जानवर है जो बड़ा दुनिया में बड़े कम एरियाज़ में बचता है, तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में तकरीबन ख़त्म हो गया था। उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आया ट्रॉफी हंटिंग का, कि उन्होंने स्पेशल बाहर से लोग आते हैं, $1-1 लाख देते हैं एक आईबैक्स को मारने के लिए। तो वो बाहर से आते हैं, वो फिर $1 लाख जो वो देते हैं वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुकामी लोगों के अंदर। तो फिर मुकामी लोगों को जब पैसा मिलता है वो प्रोटेक्ट करते हैं। आज इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है आईबैक्स का कि वो मुझे उन्होंने दिखाया, हम सड़क से नज़र आते हैं आईबैक्स फिरते हुए ऊपर, क्योंकि लोगों का स्टेक हो गया उसमें। इसी तरह हमने लोगों का स्टेक बनाना है नेशनल पार्क्स को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म आएगी, उनका फ़ायदा होगा। ये जो हमारे सारे अब इलाके हैं जो हम टूरिज़्म के लिए खोल रहे हैं, इनके अंदर जो दरख्त हैं इनको बचाने के लिए लोकल लोगों को हमने इन्वॉल्व करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी रोज़गार बेहतर करना है, ताकि वो फिर स्टेक होल्डर्स बन जाए। आखिर में पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, हमारी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन एमिशंस में मिनिमल है, ना होने के बराबर है। और जो अमीर मुल्क हैं, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन एमिशंस में जिनकी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कम से कम वो फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे जैसे मुल्क ग्लोबल वार्मिंग फाइट कर सकें, हम अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। अब मसला क्या है? रिसोर्सेज का डिफरेंस। हमारे पास मसलन क्या कंस्ट्रेंट्स है पाकिस्तान के पास? हमने बड़ी मुश्किलों से पैसा निकालते हैं अपनी 10 बिलियन ट्री सुनामी के लिए, और फिर ये जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स हैं, हमारे पास आधा पैसा जो हमारा टैक्स का वो तो चला जाता है कर्ज़ों की किस्तें अदा करने में। जो बाकी बचता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट, तालीम, लोगों की सेहत के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए यानी वेल्थ क्रिएशन के लिए।
तो जो पैसा असल में इतना उसके ऊपर डिमांड है कि हमारा जो पैसा बचता है वो बहुत कम होता है। हम बड़ी मुश्किलों से पैसा निकालते हैं अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। अब मैं आपको रिसोर्सेज का सिर्फ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह की रिसोर्स डिफरेंशियल है हमारे और अमीर मुल्कों में। कोरोना के अंदर हमने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में रिलीफ दिया लोगों को, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें मुतासर हुई, तो वो हमने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव दिया, और वो मर के $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर था। अमेरिका ने अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए अब तक 4,000 अरब डॉलर खर्च कर चुके। तो किधर 22 करोड़ लोगों का 8 अरब डॉलर और किधर 33 करोड़ लोगों का 4,000 अरब डॉलर। ये जो रिसोर्स डिफरेंशियल है, ये इसकी वजह से वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट भी करते हैं, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनको उन सारे मुल्कों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि क्लाइमेट की जंग लड़ रहे हैं। और मैं इसमें यूनाइटेड नेशंस को, फिर UNEP को, एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ख़ास तौर पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो ये बार बार ये बात कहते रहते हैं कि अमीर मुल्क अपनी जिम्मेदारी लें, मदद करें उन लोगों की जो सारे जंग लड़ रहे हैं एनवायरनमेंट की। मसलन बांग्लादेश है, उनका बड़ा वो भी उन 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिस तरह पाकिस्तान है। तो इन सारे मुल्कों की मदद करें हमारे लिए भी, ताकि हम भी फाइट कर सकें, और ये भी फिर अपनी कोशिश करें कि जो एमिशंस हैं इनको कम करें। और ये जिस तरह हम भी अब अपनी एमिशंस के ऊपर भी हम जो आगे फैसला हमने किया है कि 2030 तक हमारा जो सारी बिजली हम बनाएंगे वो 60% रिन्यूएबल्स से बनेगी, और हमारी इंशाल्लाह 30% जो भी सारी गाड़ियाँ होंगी वो यानी इलेक्ट्रिक बिजली से चलेंगी। जिस तरह के अभी बाहर, और मैं दाद देता हूँ हमारे नौजवानों के, क्योंकि उन्होंने स्कूटर भी बना लिया है जो बिजली से चलता है, उन्होंने रिक्शा भी बना लिया है। ये सारों से हमारे शहर के अंदर जो पोल्यूशन लेवल्स है वो नीचे आएंगे। मैं पंजाब गवर्नमेंट को भी ख़ास इसलिए आज, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर के अंदर जो सारे जो भट्टे थे ईंटों के, उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 1 साल में सारे जितने भट्टे हैं उनको एक नई टेक्नोलॉजी, जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे ले आए, जो कि ये जो पोल्यूट नहीं करते। तो ये हम सारा मुल्क का, लोगों का अब ध्यान ही इस तरफ जाना चाहिए कि इस मुल्क में दरख्त उगाएं, इस मुल्क में अपने दरिया साफ करें, इस मुल्क में अपने शहरों के अंदर दरख्त उगाएं ताकि पोल्यूशन लेवल्स कम आएँ, इस मुल्क में हम सफाई करें, और इस सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम सारा मुल्क मिलके एक ही तरफ चले कि हमारा यूथ, हमारे बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए सब ये फैसला कर लें कि ये जो अब है डेकेड, ये जो यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है, डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कि हम एक दुनिया फाइट बैक करे अपना इकोसिस्टम को ठीक रिस्टोर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।